मैं यहाँ पर इस समय गांधी भवन में हूँ और मेरे साथ में यहाँ पर केपी मेनन जी हैं, जिन्होंने पूरे दुनिया की पदयात्रा की है नाभिकीय अस्त्रों को रोकने के लिए, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए। इस समय आज जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि इस समय तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है और इस खतरे के बारे में केवल पुतिन जानते हैं, लेकिन पूरी दुनिया का अस्तित्व खतरे के अंदर है। हम उनसे बातचीत करेंगे और ये बातचीत अंग्रेजी में ही हो पाएगी क्योंकि वे हिंदी उस तरीके से समझ तो सकते हैं, लेकिन उस तरीके से बोलना उनके लिए संभव नहीं है। तो आप सभी का इस फेसबुक, इस यूट्यूब लाइव के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं अपनी बातचीत शुरू करता हूँ। वेलकम केपी मेनन जी। आपके साथ में मुझे बात करना है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपने जो पदयात्रा किया था, वो आपने पदयात्रा कब की थी और किस तरीके से आपने की थी? When did you start your पदयात्रा against the nuclear disarmament? And just share your experience in a very short time because I would like to discuss the present situation more. Yes. It's a long story. 1962, June 1st, I started from Delhi. 1962, June 1st. And Delhi to Pakistan, Afghanistan, Iran, Soviet Russia, then across Europe, then to America, and ended in Japan after 3 years. So it is Delhi, Moscow, Paris, London, New York, Washington. And then we took a flight from San Francisco to Tokyo and then walked to Hiroshima. That was the total time, 3 years. Okay. From here to Pakistan, how much time did it take? And did you allow you to enter Pakistan without visa? What happened? They lead to the border of Pakistan 1 month. But I didn't have a passport in my hand at that time. Government of India sent the passport to the Pakistan border. But before that, Pakistan organized, they announced visa on the radio Pakistan, visa granted without the passport. But the next day we got the passport from Delhi. Okay. And then from Pakistan to Afghanistan you moved. And then it took about 1 month across Pakistan. And people everywhere in Pakistan welcomed. I was feeling so happy everywhere. We went. Then to Russia. Russia via Black Sea coast to Moscow. And from Moscow to Paris took another 5 months. And in Paris, the president of France put us in prison because the question asked the president of France, I asked, why do you take nuclear weapons to Pacific Island and explore there, make the whole world possible? Why don't you experiment in Paris? He didn't like it. He took prison. I don't know. Me and my friend, we were we were living in prison for 4 days. And then in the midnight, they deported to England. And in England, Bertrand Russell was our greatest inspiration and supporter. And here in India, Nehru was alive, he was supporting us. So we had very interesting time out together. And then from England, on the 22nd November, 1963, 22nd November, that was the time we got in the ship in French coast to New York. And at 1 o'clock, Kennedy was killed. And we were given the information, Kennedy shot dead. And in the ship, huge ship, Queen Mary ship, 4,000 passengers, we were eating lunch and the news came. Nobody could eat lunch at that time. And everybody felt sad because Kennedy was shot dead. But anyway, after 5 days, reaching in New York, and then New York to Washington, we walked up to the White House. And by the time Johnson became the president, and we could not meet him, but he asked his disarmament advisor to discuss with, and then traveled across in America for 4 months, talking to students. What is now coming to the present situation? What do you think that what is the situation like in context of peace, the whole world? Now the situation in Europe
Ukraine, this situation could have been prevented, and I blame United Nations for this today. Because United Nations is the only organization in the world which could have prevented this possibility, but now it is too late. So I'm afraid this could be the beginning of a third world war. I don't know. Actually, President Biden, I get information from him every week once, and he says that if the war breaks out, we will see what best we can do, etc., etc. This talk is nonsense. Anyway, if the war will break out, Europe will suffer maximum, and the rest of the world also will suffer. But United Nations, I feel we could have prevented United Nations this war. But so I'm now starting a campaign against United Nations next year. Okay, it's fine. But what people can do to prevent this war? Well, United Nations should abolish the veto power altogether. That is the first step. Veto power of 5 countries in the United Nations should be abolished. That should be the first step. All other things will follow. And if all the members of the world are, all the countries of the world are members of the United Nations, so let the countries vote. If 90% of the vote wants war, let them war. It should be totally democratic in the United Nations. No, what you are talking about is a long-term thing. But now, as a citizen, as a world citizen, what do you appeal to the people of the whole world? People should reject the war. People should support peace efforts everywhere in the world, no matter who does it. And the war which is happening should have been prevented by NATO, European Union, and United Nations. They failed. So we will fight against them also. And this NATO organization, all this is absolutely against peace. No, but the point is that what a person can do means you think that they should come out on the streets and have peace marches and others? Yeah, or anywhere in the world, everywhere in the world, there should be peace marches, there will be letters written to the newspapers, and media should come forward, and people like us who are in the society, people like us, we should come forward and organize movement, common people to protest. That's all. But in India, we do not see that the people are in any way concerned about the what's going on, the kind of attack the Russians made on Ukraine. People are not bothered at all. So, what do you say about it? Well, that is the nature of Indian society anyway. We are not very much concerned about the rest of the world. Only when it comes on our head, we will be concerned. So today, thinking people, writers, artists, social activists, all the political leaders should come forward to, can we save the world from Third World War? If not, we will also collapse in that. Okay. साथियों, आपने देखा अभी हमने बातचीत किया और केपी मेनन जी ने ये कहा कि असल में यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने के पास में जो चुनौतियां थी, जो जिम्मेदारियां थी, उन जिम्मेदारियों को उन्होंने पूरा करने का काम नहीं किया है। और उन्होंने कहा कि जो नाटो जिस उद्देश्य के साथ में बना था कि एक विश्व के अंदर शांति रहे, वो भी काम जो है एक तरीके से उसके अंदर असफल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा उनकी शिकायत संयुक्त राष्ट्र संघ को लेकर के है और उनका कहना है कि जो वीटो पावर्स हैं वो खत्म किए जाने चाहिए। मैंने ये कहा कि ये एक लंबा काम है, संयुक्त राष्ट्र संघ की पुनर्रचना का काम, वो काम तुरंत नहीं हो सकता है। तो लोगों को क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में केपी मेनन जी ये कहते हैं कि लोगों को सड़कों पर निकलना चाहिए, उन्हें जो है शांति मार्च निकालने का काम करना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि ऐसा लगता है कि जो लोग हैं वो आम तौर पर उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं है, कुछ सोचते नहीं है। उन्होंने कहा कि ये भारतीय समाज का मानस है, इसको बदलना चाहिए। जब खुद के ऊपर आता है तब भारत के लोग पूरी दुनिया से मदद चाहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो होता है उसके अंदर मदद देने को तैयार नहीं है। हालांकि मुझको ऐसा लगता है कि भारत का अगर पूरा एक ट्रेडिशन देखा जाए, विदेश नीति देखी जाए, तो ये बराबर रही, फ्रीडम मूवमेंट के पहले भी रही, फ्रीडम मूवमेंट के बाद में भी रही, कि दुनिया के अंदर एक वासुदेव कुटुंबकम के नाम पर काम करने की बात तो कही गई, लेकिन बहुत कॉन्क्रीटली उसके ऊपर कुछ काम नहीं हुआ है। लेकिन तमाम सारे देशों के लिए भारत एक इंस्पिरेशन बना है, उसने प्रेरणा देने का काम किया है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो इस समय जो तीसरे विश्व युद्ध की जो आशंका यहाँ पर
जो शांति दूत जिन्हें माना जाता है, उन्होंने एक आशा व्यक्त की है, उस दिशा के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। मैं ये भी आपको बता दूं कि केपी मेनन जी ने ये बताया था कि किस तरीके से वो भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से अफगानिस्तान होकर के वो मॉस्को गए, और किस तरीके से फ्रांस के अंदर उनको जेल के अंदर डाला गया और फिर जो है उन्हें डिपोर्ट किया गया। लेकिन लंदन के अंदर बर्नार्ड रसल के साथ में उनका बातचीत हुआ, जिन्होंने कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। तो एक समय में एक व्यक्ति अगर तय करे तो वो पूरी दुनिया की पदयात्रा करने का काम भी कर सकता है। ऐसा करने वाले जो हमारे आज हमारे बहुत प्रेरणा स्रोत केपी मेनन जी हमारे साथ रहे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू Thank you very फॉर much. टॉकिंग टू मी ऑन दिस इश्यू, और आई होप दैट better sense will prevail in the whole world, and peace will come again, at least in terms of war. Thank you very much. मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, लेखक है, सोशल सामाजिक काम कार्य करता है, हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।